अजीज़ तलबा, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग आपके लिए ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एबटाबाद के ज़रिए एहतमाम की गई। ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एबटाबाद 2011 से अपनी मदद आपके तहत सेहत, तालीम और मुआशी खुद मुख्तारी के शोबों में बेहतरी के लिए कोशां है। इदारा ने न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि मुल्क भर के नाबीना तलबा की तालीमी मुश्किलात और रुकावटों को दूर करने के लिए FA ता मास्टर्स लेवल की निसाबी कुतुब और कोर्सेज़, जिनमें इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ भी शामिल हैं, को ऑडियो रिकॉर्डिंग में मुंतकिल करने का एहतमाम किया है ताकि नाबीना तलबा आला तालीम तक रसाई हासिल करके मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें। ये तमाम ऑडियो रिकॉर्डिंग्स नाबीना तलबा को बिल्कुल मुफ्त फराम की जा रही हैं। नाबीना तलबा के अलावा दीगर तलबा भी इस तालीमी सहूलत से इस्तिफादा कर सकते हैं। ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एबटाबाद, ईमेल hdoatd@gmail.com, वेबसाइट hdorg.net, राब्ता नंबर 0345 9541 838 यानी 0345 95 41 838। Bismillahirrahmanirrahim. Unit 5, It's Country for Me, page 78. It was 11:15 at night when Joel, reading in bed, heard his mother call up, "Joel, come and feed Lambie, will you?" She usually fed the orphaned lamb, but tonight she had come home late from the meeting and did not want to go to the barn wearing good clothes. ये रात के 11:15 बजे थे जब जोएल, जो कि बिस्तर में बैठकर किताब पढ़ रहा था, इसने अपनी माँ के पुकारने की आवाज़ सुनी, "जोएल, आ जाओ और लैम्बी को चारा डालो। क्या तुम ऐसा करोगे?" वो अमूमन यतीम बच्चे को चारा डालती थी, लेकिन आज रात वो मीटिंग से घर देर से आई थी और अच्छे लिबास में वो जानवरों के बाड़े में नहीं जाना चाहती थी। The family dog, Jessica, jumped up from the doorstep as Joel came outside. A pair of overalls pulled over his pajamas, the laces of his boots dangling loose. "Hey, Jess," he greeted her, ruffling the dog's thick fur with one hand as they looped together to the barn. In his other hand he carried Lambie's milk replacement in a soda pop bottle capped by a black nipple. जो ही जोल बाहर आया तो घर के कुत्ते जेसिका ने दहलीज से छलांग लगाई। उसने पजामा के ऊपर ओवरऑल पहना हुआ था और उसके बूट के तस्मे ढीले लटक रहे थे। उसने हाय जेस कहकर उसका खैर मुकद्दम किया। कुत्ते के जिस्म के घने बालों पर हाथ फेरते हुए दोनों बाड़े की तरफ लंबे लंबे कदम लेकर चले गए और उसके दूसरे हाथ में लैम्बी का खाना था। सोडा पॉप बोतल में दूध था जिसके ऊपर काला निपल लगा हुआ था। The March air was cold and the yard light caught the mist of Joel and Jessica's breath. A dim crescent moon hung low over the east hayfield. Otherwise the night was black. मार्च के महीने की हवा सर्द थी और सहन की रोशनी में जोएल और जेसिका सांस लेने की कहर नजर आती थी। धुंधला चांद मशरिक की तरफ वाक़े सूखे घास के खेत के ऊपर चमकता था, वरना रात बहुत तारीक थी। "Here, Lambie," called Joe, opening the door to the barn where the sheep are kept in the winter. The lamb sprang up from her warm straw bedding and sucked down the bottle in 30 seconds. Her mother had died giving birth to her a week before. This may have been Joel's 33,000th trip to the barn, since he goes in and out of the barn at least 10 times a day. Joel knows these farm buildings better than he knows his own bedroom. He surely spends more waking hours in them. He knows how to care for the animals they shelter as well as he knows how to care for himself. Farming is Joel's world. जोएल ने बाड़े का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, "लैम्बी, ये लो।" वो बाड़ा जहाँ पर सर्दियों में भेड़ों को रखा जाता था। भेड़ का बच्चा मेमना
तिनकों के गर्म बिस्तर से उछल पड़ा और 30 सेकंड के कलील वक्त में पूरा बोतल पीकर खाली कर दिया। उसकी माँ हफ्ता पहले उसकी पैदाइश के दौरान मर चुकी थी। शायद ये जोएल का 33,000वां ट्रिप था, क्योंकि वो दिन में कम से कम 10 बार बाड़े के चक्कर लगाता था। जोएल अपने बेडरूम से भी ज़्यादा बाड़े की इस इमारत से वाकिफ़ था। वो इन बाड़ों में ज़्यादा वक्त गुजारता था। वो जानता है कि इनमें रहने वाले जानवरों का किस तरह ख्याल रखा जाता है और इससे भी वाकिफ़ है कि अपना ख्याल कैसे रखा जाता है। काश्तकारी जोएल की कुल कायनात है। Joel Holland has lived on his 245-acre farm since he was born 13 years ago. It is the farm of his ancestors. Page 80. He lives in the house that his great-grandfather built. The land he helps his father and brothers farm is land that his grandfather James Holland bought in 1860. James was an Irish immigrant. He drove a team of horses to plow the land and make it ready for corn. Now, 5 generations later, Joel plows the same land atop a tractor that has the power of 120 horses. The rich black soil has been pampered by Hollands for over 120 years. Farming, it is Joel's heritage. Joel Holland 13 साल कबल अपनी पैदाइश ही के वक्त से इसे 1245 एकड़ राजी पर आबाद। ये उसके बाव अजदाद की ज़मीन थी। वो अपने दादा की तामीर करदा घर में रहता था। वो ज़मीन जिसमें वो अपने बाप और भाइयों की मदद करता है, ये वो ज़मीन है जो इसके दादा जान जेम्स हॉलैंड ने 1860 में ख़रीदा था। जेम्स एरिश आबाद कार था। वो ज़मीन में हल चलाने और उसे मकई की फसल के लिए तैयार करने के लिए घोड़ों से काम लेता था। अब 5 जन्म बाद जोएल इस ज़मीन में ट्रैक्टर के ज़रिए हल चलाता था। 120 घोड़ों की ताकत रखता है। हॉलैंड का ख़ानदान 120 सालों से इस ज़रख़ेज़ ज़मीन की निगाहदशत करते रहे हैं। इस ज़मीन में खेती बाड़ी करना जोएल की विरासत है। The Holland farm is near Scales Mound, a tiny town of 400 people snuggled in the northwestern corner of Illinois. The land there is hilly, rolling in great waves. In fact, just a few miles away is the highest point in the state. Holland की ज़मीन सेक्लर्स माउंट के करीब वाक़या है, स्केल्स माउंट के करीब वाक़या है, जो कि 400 अफराद पर मुश्तमिल एक छोटा सा कस्बा है जो कि एलिनियस के शमाली मगरबी अतराफ़ में बाहम इकट्ठे रहते हैं। यहाँ की ज़मीन पहाड़ी है जो कि पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल है। दर हकीकत चंद मील के फासले पर रियासत का बुलंद तरीन मुकाम वाक़ है। जोएल अटेंड्स पब्लिक स्कूल इन स्केल्स माउंट इन अ स्प्लिट लेवल brick building with 235 other grade school and high school pupils. About half the students are farmer. This year Joel will graduate from 8th grade and begin 9th, but his class will not get larger except for 3 foster children who came and left. Joel has been with the same 19 kids since 1st grade. Joel Scales Mount के एक पब्लिक स्कूल में पढ़ता है। मुख्तलिफ हिस्सों पर मुश्तमिल अलग अलग अमारात हैं जिनमें कुल 235 मुख्तलिफ दर्जों और हाई स्कूल के शागिर्द पढ़ते हैं। तकरीबन निसफ तलबा का इश्तकार हैं। इस साल जोएल 8वीं दर्जे से 9वीं दर्जे में पास होकर चला जाएगा, लेकिन उसकी जमात के तलबा की तादाद में इजाफा नहीं होगा सवाए उन 3 लिपालिक बच्चों के जो आए और चले गए। जोएल पहले दर्जे से उस वक्त तक 19 बच्चों के साथ रहा है। I know every kid and particularly the whole school, he says. Some of those guys in school on TV do not even know the people in their own class. वो कहता है कि वो स्कूल के हर बच्चे को जानता है, उनमें से बाज़ लड़के अपनी जमात के लड़कों को भी नहीं जानते. Joel is a good student. Though reluctant to discuss its, I guess I pull mostly A's, some B's. In national testing, Joel scored 99%, meaning that only 1% of students scored higher. His studies are typical of any 8th graders in the United States. We are doing percents in maths, English, forget it. In history, we are up to FDR. In science, we do experiments like taking this chemical HCl and blowing up pieces of chalk. जोएल अच्छा तालिब इल्म है, अगरचा वो इसका जिक्र करने से हिचकिचाता है. मेरा अंदाज़ा है कि मैं अक्सर A ग्रेड हासिल करता हूँ और कुछ B ग्रेड भी. नेशनल टेस्टिंग में जोएल ने 99% नंबर हासिल किए. मतलब ये कि सिर्फ 1% तलबा ने उससे ज़्यादा नंबर लिए. उसकी स्टडी
अमेरिका के किसी भी 8वीं दर्जे के तलबा के बराबर है। पेज 82। हम रियाजी में फ़ीसद कर रहे हैं, अंग्रेज़ी तो भूल जाओ। तारीख़ में हमने FDR, फ्रैंकलिन डिले, नोर्सवेल्ट तक पढ़ा है। साइंस में हम तजुर्बात कर रहे हैं, मसलन HCl लेकर इसे चाक के टुकड़ों को उड़ा देना। बट व्हेन द स्कूल बस ड्रॉप्स Joel off, he runs up quarter-mile lane to his farmhouse, slips out of his sneakers and pull on his boots. Then his life is no longer typical of an average teenager. His footgear is the clue. Joel wears boot every day, no matter what the season. That's because he does chores every night after school and for several hours on weekend. The chores are boot work, hard, heavy and sometimes dirty. लेकिन जब स्कूल बस जोएल को उतारता है तो वो अपने फार्म हाउस तक मील की चौथाई के बराबर गली में दौड़ कर जाता है, अपने कपड़े उतारता है, बूट पहनता है। फिर उसकी ज़िंदगी एक मुतवस्सित नौजवान की तरह नहीं होती। उसके जूते उसके निशान हैं। जोएल रोज़ाना बूट पहनता है, ख्वाह कोई भी मौसम हो। यही वजह है कि वो हर रात स्कूल से आने के बाद और हफ्तावार छुट्टी पर कई घंटे काम करता है। घर के काम काज के लिए बूट की ज़रूरत होती है क्योंकि ये काम सख्त, भारी और बाज़ औक़ात गंदा भी होता है। The daily chores that Joel does help run the farm and help support the family. Joel is a teenager, but he does the work of an adult. Unlike most families where the parents alone make the money, farm families work together. Each child's labor is not only important to family well-being, it is essential. रोज़ाना के छोटे मोटे काम जो जोएल सरंजाम देता है वो खेतों की देखभाल और घर वालों को मदद देना है। जोएल बच्चा है मगर बड़े आदमियों की तरह काम करता है। ज़्यादातर ख़ानदानों के बरक्स जहाँ वालिदैन अकेले पैसे कमाते हैं, काश्तकार ख़ानदान इकट्ठा काम करते हैं। हर एक बच्चे की मेहनत, पेज 83। हर एक बच्चे की मेहनत न सिर्फ ख़ानदान उनकी बेहतरी और बहबूद के लिए अहम होती है बल्कि लाजमी होती है। The Hollands operate a self-sufficient farm typical of many in the Corn Belt. They raise livestock, cattle and a few sheep. In each herd they keep some females to replenish the stock. The rest of the animals are sold for slaughter and land on America's table as beef and lamb. The Hollands grow virtually all the food that animals need, corn, oat and hay. They sell the surplus, though most of their money comes from selling the animals themselves. हॉलैंड एक खुद कफील ज़मीन में काश्तकारी करते हैं जो कि कॉर्न बेल्ट की दूसरे किसी भी ज़मीन की तरह है। वो माल मवेशी पालते हैं और चंद भेड़। हर एक रेवड़ में वो माल मवेशियों की तादाद बरकरार रखने के लिए कुछ मादा जानवर रखते हैं। बकिया जानवर ज़िबा करने के लिए बेचे जाते हैं और अमेरिका के होटलों में बड़े और छोटे गोश्त के तौर पर पेश किए जाते हैं। हॉलैंड्स का ख़ानदान हर वो चीज़ उगाते हैं जिनकी उनकी जानवरों को ज़रूरत होती है, मसलन मकई, जौ और घास। ज़ायद अनाज वो बेच देते हैं अगरचा उनकी ज़्यादातर आमदन जानवरों के बेचने से आती है। To run a farm like this, farmers have to have many skills. They have to be machine operators, driving immense and powerful vehicles. They have to be mechanics, repairing them, husbandmen, raising livestock, veterinarians, tending them when sick, agriculturists, growing food on a large scale, and a business people managing like Joel's father and a farm operation worth nearly $1 million. As Joel works on the farm, he is all these workers. इस किस्म की ज़मीनों में काश्तकारी करने के लिए काश्तकारों को बहुत सी महारतें सीखनी पड़ती हैं। इन्हें मशीन चलाना सीखना होता है ताकि बड़े और ताकतवर गाड़ियाँ चला सकें। इन्हें मैकेनिक बनना होता है ताकि मशीनों की मरम्मत करें। इन्हें काश्तकार होना चाहिए ताकि मवेशी पाल सकें। पेज 84। इन्हें सलूतरी बनना पड़ता है ताकि बीमारी की सूरत में जानवरों का इलाज कर सकें। माहिरीन ज़राअत होना चाहिए कि बड़े पैमाने पर गल्ला उगाएं और कारोबारी बनना पड़ता है ताकि वो जोएल के बाप की तरह ज़मीनों के $1 मिलियन के मामलात संभाल सकें। जब जोएल खेतों में काम करता था तो इन तमाम किस्म के लोगों का काम करता है। Yet he is a boy still and like an apprentice continues to learn new skills. Joel takes his learning seriously because his goal is to become a farmer. He is extremely alert and watchful like a cat. Even when not actively involved in a chore, Joel can readily answer any question about what is going on. He listens as his dad counsels a seat customer in the kitchen, as his brother Terry consults a vet about recent death in his hog herd. As his older brothers discuss soil planning while they mend a fence, knowledge seems to be constantly seeping, sometimes flowing into Joel's mind. फिर भी वो बच्चा है और अगर एक शागिर्द की तरह मुसलसल नई नई महारतें सीखता रहता है। जोएल इस इल्म को
संजीदगी से लेता है क्योंकि उसका मकसद काश्तकार बनना है। वो एक बिल्ली की तरह होशियार और चौकन्ना होता है, यहाँ तक कि वो घर के छोटे मोटे कामों से अलग थलग रहकर भी वो किसी भी काम के बारे में जवाब दे सकता है। वो बाप के बीचों के गाहक को दिए जाने वाले मशवरों को गौर से सुनता है। जब उसका भाई टेरी एक स्लूथरी से सुअर के रेवड़ में हालिया अमवात के बारे में मशवरा लेता है, और जब उसके बड़े भाई बाड़ मुरम्मत करते वक्त ज़मीन की तैयारी के बारे में बहस करते हैं, तो वो इनको गौर से सुनता है। इल्म मुसलसल जोएल के जहन में सरायत करता है, बल्कि बाज़ औक़ात उसके दिमाग में बह कर जाता है। Joel is the youngest of Ed and Betty Holland's 6 children. Only he and his brother Marty, 16, still live at home. Two other brothers, Bill and Terry, come home each day to eat meals with the family. Bill and Terry rent neighboring farms. Each has his own livestock herd, but they farm their land collectively with their father. जोएल, एड और बेटी हॉलैंड्स के 6 बच्चों में सबसे छोटा है। सिर्फ वो और उसका भाई मार्टी, जो कि 16 साल का है, घर पर रहते हैं। 2 और भाई बिल और टेरी घर वालों के साथ खाना खाने के लिए घर आते हैं। बिल और टेरी पड़ोस की ज़मीनों को उजरत पर लेते हैं। हर एक के पास अपने अपने जानवरों के रेवड़ हैं, लेकिन वो अपने बाप के साथ मिलकर इकट्ठा ज़मीनों की देखभाल करते हैं। 2 other children, Kevin and Kathy, do not live at home. This year, Kevin, 22, will graduate among the Holland children. We insist they all go to college and get a taste of what it is like off the farm, says Betty. Then if they want to come back to farming, that's fine. 2 दूसरे बच्चे केविन और कैथी घर पर नहीं रहते। इस साल केविन 22 साल शिकागो के कॉलेज से ग्रेजुएशन करेगा। वो हॉलैंड के बच्चों में ग्रेजुएशन करने वाला छोटा लड़का होगा। बेटी कहता है कि हम जोर देते हैं कि वो कॉलेज जाकर काश्तकारी के अलावा कामों का भी मज़ा चखे, फिर अगर वो दोबारा काश्तकारी की तरफ आना चाहते हैं तो बेहतर है। Kathy, 24, is the oldest child and the only daughter. She is now a Roman Catholic nun doing graduate study in Debkulowa. But like her brother, she grew up farming and she still misses it. They called this maid during her final exams and said, I would give anything to be plowing instead. कैथी, जिसकी उम्र 24 साल है, सबसे बड़ी और उस ख़ानदान की वाहिद बेटी है। अब वो रोमन कैथोलिक राहिबा है जो कि डोबिक एवियो में ग्रेजुएशन की स्टडी कर रही है, लेकिन अपने भाइयों की तरह वो काश्तकारी करती हुई बड़ी हुई और उससे अब भी उसकी याद आती है। पेज 86। कैथी ने इस साल मई में आखिरी इम्तिहान के दौरान कॉल किया और कहा, मैं खेती बाड़ी के बदले सब कुछ दे दूंगी। As the youngest, Joel has at times had more farming teachers than he has wanted. One night he sat at the kitchen table listening to his dad and brothers talk about the rewards of farming. It's a good independent life, said Bill. You are your own boss. I would not know, said Joel, grinning. I have got bosses. Who? Asked his dad. Joel pointed to each one around the table. They all laughed. सबसे छोटा होने के नाते जोएल को अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा काश्तकारी सिखाने वालों से वास्ता पड़ता है। एक रात वो किचन में दस्तरखान पर बैठकर बाप और भाइयों से काश्तकारी के फ़ायदों के बारे में बातें सुन रहा था, तो बिल ने कहा, ये एक अच्छी और आज़ाद ज़िंदगी है, तुम खुद अपने मालिक हो। जोएल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं नहीं जानता, मेरे तो बहुत मालिक हैं। डैड ने पूछा, कौन? जोएल ने मेज़ के गिर्द बैठे हर एक फ़र्द की तरफ इशारा किया। इस पर वो सब हंस पड़े। Joel used to be largely at somebody's side, watching and listening, lending a hand, or going on the run for a tractor or forgotten tool. He took the occasional bossing he got in stride. Now he is so busy with his own work that he is no longer available to be everybody's gopher. जोएल ज़्यादातर किसी दूसरे फ़र्द के पास हुआ करता था, देखता और सुनता था, हाथ बटाता था या ट्रैक्टर या किसी भूले हुए औजार के पीछे जाता था। वो कभी कभार दूसरों के लिए भी काम करता था। अब वो अपने कामों में इतना मसरूफ़ है कि मज़ीद दूसरों के इधर उधर के मामूली कामों के लिए वक्त नहीं निकाल पाता। If I had just one word to describe Joel, it would be enthusiasm, says Betty. He uses his youthful energy indiscriminately. On one summer day, he jumped 15 fences, drove farm machinery 25 miles, fed 320 animals, opened and closed 8 gates, walked and ran about 8 miles, jumped on and off the tractor 26 times, lifted 900 pounds of grain, shoveled 4,000 pounds, ate about 2,600 calories. बेटी कहता है कि अगर मुझे एक लफ्ज़ में जोएल को बयान करना हो तो मैं कहूँगा जोश जज्बा। वो अपनी जवानी की ताकत को बिला इम्तियाज़ इस्तेमाल करता है। गर्मी के एक ही दिन में 15 बार
बाढ़ पार किए, 25 मील तक मशीनरी चलाई, 320 जानवरों को चारा डाला, 8 दरवाज़ों को खोला और बंद किया, 8 मील तक चला और दौड़ा, 26 मरतबा ट्रैक्टर पर चढ़ा और उतरा, 900 पाउंड अनाज को उठाया, 4000 पाउंड गला खर्चे से साफ किया और 2600 हरारें खाईं। On weekends and during the summer, Joel works outdoor anywhere from 8 to 15 hours a day. The only time he minds it is during early spring. Then the snow melts and rain often pours down daily, turning the farmyard into a swamp. Mud sucks at his boots, making walking itself a tedious chore. More than the brother, though Joel hates the ugliness. When it rains, everything seems so awful. छुट्टी के दौरान इन गर्मियों में जोएल 8 से 15 घंटों तक बाहर काम करता है। सिर्फ बाहर का आगाज़ उसे बुरा लगता है कि बर्फ़ पिघलती है, रोज़ाना बारिश होती है जो फार्म को दलदल में तब्दील कर देता है। कीचड़ उसके जूतों से चमट कर चलने भरने को भी एक थका देने वाला काम बना देता है। ज़हमत से कहीं ज़्यादा जोएल गंदगी से नफरत करता है। जब बारिश होती है तो हर चीज़ बदसूरत हो जाती है। Regardless of how much energy his work consumes, Joel has plenty left over for sports. He hunts deer and traps wildlife in the fall and snowmobiles in the winter. Page 88. Spring brings softball and basketball games, and summer provides weather for water skiing and fishing. Nearly all his favorite sports are played outdoors. इस बात से कतई नज़र के उसका काम कितनी तवानाई खर्च करता है, जोएल के पास खेल कूद के लिए काफ़ी वक्त बच जाता है। वो हिरन का शिकार करता है, जंगली जानवरों को पकड़ता है, सर्दियों में बर्फ गाड़ी चलाता है, मौसम बहार सॉफ्ट बॉल और बास्केटबॉल खेलने का मौका देता है, और गर्मियों का मौसम पानी से फिसलने और मछलियों का शिकार का मौका फराहम करता है। उसके पसंदीदा तमाम तर खेल बाहर खेले जाते हैं। If he had to live in the city for a year, Joel says he would mostly miss the land. I had missed seeing things grow, the change of season. In fact, if Joel could choose any place in the world to live, he guesses he would live right here. It would have to be country. After living out here, I do not think I would ever want to be in the city. You just do not have the freedom or the responsibilities. I am not saying a city kid does not have responsibilities, but you do not work as a family the way you do on a farm. It would just have to be country for me. जोएल कहता है कि अगर उसे 1 साल के लिए भी शहर में रहना पड़े तो उसे ज़्यादातर अपनी ज़मीन की याद आएगी। मुझे चीज़ों का उगते हुए देखना याद आएगा, मौसमों की तग़यीर और तब्दील। दर हकीकत अगर जोएल को दुनिया में ज़िंदगी बसर करने के लिए कोई जगह पसंद करना पड़े तो वह सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर रहना पसंद करेगा। ये गाँव ही होगा। यहाँ पर रहते हुए मेरा नहीं ख्याल कि मैं शहर में रहना पसंद करूँ। वहाँ पर तो मैं आज़ादी हासिल नहीं होगी या ज़िम्मेदारियाँ। मैं ये नहीं कह रहा कि शहर के बच्चे ज़िम्मेदारियाँ नहीं होती, लेकिन वहाँ पर तुम एक ख़ानदान की तरह बाहम मिलकर काम नहीं करते जैसा कि यहाँ देहात में करते हो। इसे मेरे लिए वतन होना पड़ेगा। Page 89. Comprehension. Answer the following questions. Question 1. Analyze the text of its country for me and give examples of fact, opinion, anecdote, and quotations. Answer. The text of its country for me contains facts, opinions, anecdote, and quotations. Fact. Her mother had died giving birth to her a week before. Fact. Holland Farm is near Scales Mount. Fact. Joel is the youngest of Ed and Betty Holland's 6 children. Opinion. After living out here, I don't think I would ever want to be in the city. Anecdote. When Joel says that he has got many bosses and points to each one around the table, it is an example of anecdote. It was 11:15 at night is also an example of anecdote. Quotation. Bill said, "You are your own boss." I would give anything to be plowing instead. Question 2. How coherence and cohesion is achieved in the essay. Illustrate with examples. The author has successfully achieved coherence in the essay. The whole story revolves around the personality of Joel, who is a very watchful and intelligent boy whose only aim is to become a good farmer. The writer uses logical and verbal bridges to maintain coherence in his essay. Every paragraph is related to the previous one, having details that support each other. Page 90. Question 3.
Explain significance of the title, It's Country for Me, and its connection to the theme of the lesson. The title, It's Country for Me, is very significant and related to the theme of hard work and dignity of labor. Village life is very pleasant where family members live together, sharing responsibilities with each other. They help each other in every difficult time. Joel works hard, helps his parents in daily chores, and he considers village for himself as a country where he leads a happy life with his family. Question 4. Describe Joel's treatment of Lambie and Jessica, the small dog. What does this show? Joel's treatment of Lambie and Jessica show on the one hand that these animals are very familiar with Joel and they like him very much. He cares for them and loves them. On the other hand, it also shows that Joel is an expert farmer who knew how to care for them and for himself as well. Question 5. Compare and contrast your daily routine with that of Joel. How would you rate the motivational level of you doing work with that of Joel's? Joel's daily routine is totally different of my routine. He spends more time helping his parents in the field. He does great job while caring for animals. He knows each and every thing about raising cattle and doing farming, but I only go to school and help my parents in daily chores, but not so much. Joel's motivational level is very high. Question 6. What skill one is required to learn if he wants to be full-fledged farmer? Answer. One has to learn about machines and repairing them. He has to be husbandman, mechanic, agriculturist, veterinary, and businessman. Question 7. In what way does Joel play the role of an adult? Answer. Joel is although a teenager, but he does the work of an adult. He goes to school, but when he returns, he does daily chores which are hard, heavy and dirty works. He fully supports and helps his parents like a responsible man. He also continuously learns all the skills required for a good farmer. Writing suggestions. Question. Summarize the lesson It's Country for Me in your own words. Answer. See the answer in the summary section. Vocabulary and grammar. Search the following words related to space science and astronomy in authentic source and then write the correct word in front of its meaning below. 1. The beginning of a space flight launch. 2. Attach self to another space vehicle. Dock. 3. Counting to 0 before launch. Countdown. 4. Going around the planet. Orbit. 5. The force that all celestial bodies have. Gravity. 6. When the space vehicles leave the surface. Liftoff. 7. Using astronauts, not computers or animals. Manned. 8. Leading in the sea. Splashdown. Page 92. Grammar. A. Fill in the article a, an, or the where necessary. Choose X where no article is used. 1. I like a blue t-shirt over there better than the red one. 2. Their car does 150 miles an hour. 3. Where is the USB drive I lent you last week? 4. Do you live X Bristol? 5. Is your mother working in the old office building? 6. Afsha's father works as an electrician. 7. The tomatoes are 33 pence a kilo. 8. What do you usually have for X breakfast? 9. Hashir has X terrible headache. 10. After this tour, you have a whole afternoon free to explore the city. B. Fill in the blanks with the definite article the if needed. Put an X if not needed. 1. My grandmother likes X flowers very much. 2. I love the flowers in the garden. 3. See you on X Wednesday. 4. I always listen to news in the morning. 5. Zohaib goes to work by X bus. 6. Don't be late for the school. 7. Listen, Kashif is playing the trumpet. 8. We often see our cousins over X Eid. 9. She has never been to X Nathia Gali before. 10. What about going to Karachi in X February? Page 93, Unit 6, Mother to Son poem. Well, son, I'll tell you, life for me ain't been no crystal stair. It's had tacks in it, and splinters, and boards torn up, and places with no carpet on the floor, bare. अच्छा बेटा, मैं आपको बताऊं कि ज़िंदगी मेरे लिए हमवार रास्ता नहीं रहा है. इसमें तेज़ और नोकदार कील थे, इसमें चिटियाँ
चींटियाँ थीं और फटे हुए तोड़े हुए तख्ते थे, और ना मैं कालीन बिछे जगहों पर चली हूँ बल्कि नंगी ज़मीन पर चली हूँ. All the time I see been a climbing on and reaching landings and turning corners and sometimes going in the dark where there ain't been no light. लेकिन मैं मुसलसल ज़िंदगी की सीढ़ी पर चढ़ी हूँ और ऊपर मुकामात तक पहुँची हूँ, और मैंने कोने भी तलाश कर लिए हैं. पेज 94. और बाज़ दफ़ा तारीकी में भी चली गई हूँ जहाँ पर कोई रोशनी भी नहीं थी. So boy, don't you turn back, don't you sit down on the steps, cause you find it's kinder hard. Don't you fall now, for I see still going honey, I see still climbing, and life for me ain't been no crystal stair. बस लड़के कभी वापस न मुड़ना और ना रास्ते में बैठ जाना. अगरचे ये काम आपके लिए सख्त और मुश्किल होगा, तुम अब नीचे न गिरना. मैं अब भी इस्तिकामत के साथ जा रही हूँ और ऊपर चढ़ती जा रही हूँ, और ये ज़िंदगी मेरे लिए कोई आसान चीज़ नहीं है. Comprehension. Answer. What is the dominant theme of the poem Mother to Son? The dominant theme of the poem is hope and courage in the hour of difficulties. The poem explores the dignity and determination of a person when he faces hardship of life. Question 2. What are some of the literary techniques used in the poem? Answer. Literary techniques are tools that enable the writers to present their ideas and thoughts, emotions and feelings with the use of these. Here in this poem, the poet has used metaphors comparing mother's life to a staircase. Similarly, staircase symbolizes hardship. He has also used allusion when he refers to crystal stair, Jacob's stair from the Old Testament. In this way, she also uses assonance and consonants by repeating the sounds like O and so boy, don't you, and sounds of T and R in the lines where there ain't been no light. Question 3. What is extended metaphor? How does Hughes use this literary technique to illustrate the consistent struggle of mother in her life? Give examples. Extended metaphor means a comparison between two unlike things that continues throughout a series of a sentence in a poem or in any other writing. Here in this poem, the mother's life has been described as a staircase. The poet says that the stairs are not made of crystal, but they have some obstacles like sharp nails and splinters, and also it has darkness. But in spite of these difficulties, she has always kept climbing the stairs of life. Question 4. In poem Mother to Son, Hughes repeats some lines. What function does it serve in poem? Explain. Answer. There is repetition of some lines in the poem which has created a musical quality in the poem. It has also created rhetorical impacts. For example, the line, life for me ain't been no crystal. Similarly, the words, do not you, have also been repeated in some lines. Page 96. These lines carry the thought from one sentence to another and from one stanza to another. Question 5. What type of imagery is used in poem? What does it suggest? Answer. In the poem Mother to Son, different images has been used. Most of this imagery used here appeals to the sense of sight. For example, the words crystal stair, places with no carpet, set down on the steps, corner without light, etc. The image of stairway also provides a view of the poverty in the northern cities of America. Question 6. What is the tone of the poem? Give examples from the poem. Support your views with instances from the poem. Answer. In this poem, the poet Langston Hughes gives his views on the subject of life and resiliency. The tone can be called resilient or gritty. For example, it had tacks on it, splinters, places with no carpet, bare. Another possible tone is didactic. His style is sometime instructional. For example, so boy, don't you sit down, don't you fall now, cause you finds it's kinder hard. Page 97. Vocabulary and grammar. Find the meaning of the following idioms related to animals in suitable reference source and then match them to the exact meaning. Column A. You can't teach an old dog new tricks. 2. Crocodile tears. 3. Bear with a sore paw. 4. Have a whale of a time. 5. To rat on somebody. 6. Cold turkey. 7. Don't count your chickens before the hatch. 8. Hen pecked. 9. Dog tired. 10. A fly in the ointment. 11. A bee in your bonnet. Column B. D. Someone who is too accustomed to old habits won't want to change. C. False tears to give impression of sadness. B. Someone in a bad mood. G. Have an exciting, interesting time. Enjoy oneself enormously. J.
Tell a person in authority about the bad behavior of another person. K. Period of time without something you are addicted to. A. Don't presume anything until it is certain. E. Husband who is nagged at by his wife. 5. Extremely tired. 8. One big problem in an otherwise faultless plan. I. Be angry, resentful about a certain issue. Page 98. Modal verb. A. Which of three sentences containing a modal has the same meaning as the original one? A. They are able to speak English well. They can speak English well. 2. Ali is not allowed to stay out late. Ali must not stay out late. 3. Do I have to clean the kitchen? Answer. Should I clean the kitchen? 4. Are you able to drive a tractor? Answer. Can you drive a tractor? 5. We are not allowed to swim when the red flag is flying. Answer. We must not swim when the red flag is flying. She is not able to read Chinese. Answer. She cannot read Chinese. 7. Do you think we are allowed to park here? Answer. Do you think we may park here? 8. You don't have to do this exercise. Answer. You need not to do this exercise. 9. We have to stop when the traffic lights are red. Answer. We must stop when the traffic lights are red. 10. Am I allowed to ask a question? Answer. May I ask a question? B. Fill in the blanks with appropriate modal auxiliary verbs in the parentheses. 1. It is possible that Christopher Marlowe might have written plays for Shakespeare. 2. Daughter asked her mother if she might go out. 3. Speak slowly lest you should awake the child. 4. Children should take tea at night. 5. She came here so that she might meet her child. 6. May her soul rest in peace. 7. They need not read this book for this topic. 8. You will to go to Peshawar tomorrow to attend the meeting. 9. If you stayed here, you would not face the problem. 11. If she had worked hard, she would have passed. 11. He will be given warm welcome if he wins the tournament. 12. Children dare not to go to the roof at night. 13. She could read a book while watching TV during her school days. 14. He can pass this time as he has worked satisfactorily hard. 15. She said that she would prepare dinner herself. 16. Khan ought to be at home. 7. They used to play cricket every day when they were in the college. 18. Could you please help me lift this box? 19. Would that I knew her. 20. Anyone can write a poem on this topic. C. Fill in the blanks. 1. I don't think I'll have much work next week. I think I'll be able to take a day off. 2. Excuse me, can you tell me where the bus station is? 3. They haven't we solved the problem yet. 4. She can play the flute and the guitar. 5. When we were younger, we could watch movies all afternoon. Now we think it's boring. D. Filling in the blanks with the model from the list below. 1. Oh no, I think they might be hurt, but I am not. 100. 2. They look just the same. I am sure the boy must be his son. 3. That looks delicious and I am so hungry. May I have some? 4. He is running very well. I think he may win. 5. That looks like fun. May we paint some eggs with you? E. Filling in the blanks with the model from the list below. Wow, my house is a mess. I really have to clean a bit. 2. Professor, do we have to finish all the exercises on the test? 3. The judge said that he'll have to make a formal apology to the public on television. 4. If you want to camp in the park, you have to pay for a permit first. 5. I have worked too long. I need take a break. F. Filling in the blanks with a model from the list below. 1. He should go inside or he will get a terrible sunburn. 2. I think we should play. What do you think? 3. He ought to stop drinking so much coffee or he'll make himself sick. 4. She has a beautiful voice. She had better record a CD. 5. His cell phone is ringing. I think he should answer it. Page 101, Unit 7. Choice of career. Dear Kashif, in your letter you have asked me for the selection of career for you. I, however, think that this is the decision you should make on your own, because choosing a career is one of the most important decisions you will make in life. It's about so much more than deciding what you will do to make a living. To start with, think about the amount of time you spend at work. We are on the job approximately 71% of every year.
Over our lifetimes, this comes to roughly 3.5 years out of the 45 years most of us spend working, from the beginning of our careers until retirement. The importance of selecting a career with which we are satisfied cannot be overemphasized. While some people are lucky enough to just know what they want to do and end up in satisfying careers without giving it much thought, most of us are not. Many people don't put enough effort into choosing occupations or pick them for the wrong reasons. Maybe they choose careers that seem secure or pay well, then they end up unhappy. The best way to make sure that doesn't happen to you is to make a well thought out decision. I would like to give some pragmatic suggestions that will help you in the selection of career. प्यारे काशिफ, अपने ख़त में तुमने मुझसे तुम्हारे लिए करियर पेशे के इंतखाब के लिए कहा है। पेज 102। ताहम मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा फ़ैसला है जिसे तुमने ख़ुद करना है, क्योंकि करियर का इंतखाब एक अहम फ़ैसलों में से एक है जो तुम्हें ज़िंदगी में करना है। ये उस फ़ैसला करने से ज़्यादा मुतल्लिक़ है कि तुम्हें रिस्क कमाने के लिए क्या करना है। पहले तो उस वक्त से मुतल्लिक़ सोचो जो हम काम करने में गुजारते हैं। हम हर साल तकरीबन 17% वक्त जॉब में गुजारते हैं। पूरी ज़िंदगी में ये उन 45 सालों का 3.5 हिस्सा है जो हम अपने करियर के शुरू करने से लेकर रिटायरमेंट तक गुजारते हैं। करियर के इंतखाब की अहमियत जिससे हम मुतमईन हों पर ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया जा सकता। कुछ लोग इतने खुशकिस्मत होते हैं कि वो अपने काम को जानते हैं और इस पर ज़्यादा सोच विचार किए बगैर अपना करियर ख़त्म कर देते हैं, जबकि हम ऐसे नहीं हैं। बहुत से लोग पेशों के इंतखाब के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करते या गलत वजूहात की वजह से इन्हें मुंतखब करते हैं। शायद वह ऐसा पेशे का इंतखाब करते हैं जो महफूज हो, ज़्यादा तनख्वाह वाले हों, फिर उनकी करियर परेशानी पर ख़त्म होती है। इससे ऐसी परेशानी से बचने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि पेशों से मुतल्लिक़ फ़ैसले बहुत सोच विचार के बाद किए जाएँ। मैं आपको कुछ अमली तजावीज़ देना चाहूँगा जो करियर के इंतखाब में तुम्हारी मदद करेगा। The first step in your choice of career is self-assessment and retrospection. What do I know about myself? Determining what your skills are, what you're enjoying doing, and what is important to you in your life is part of the process of self-assessment, which is fundamental to career development. Knowing what matters to you makes it so much easier to make your way to a great job. You should also take time to examine the activities you like to do when you are not working. Your hobbies and leisurely pursuits can give you great insight into future career paths. करियर के इंतखाब में सेल्फ असेसमेंट यानी मुहासबा नफ्सी और रेट्रोस्पेक्शन यानी माजी के वाक़यात की जांच, यानी कि मैं अपने मुतालिक क्या जानता हूँ, इसका तयन करना, तुम्हारी महारतें क्या हैं। पेज 103। कौन सी चीज़ों को तुम पसंद करते हो और काम में तुम्हारे लिए क्या अहम है। ये सब चीज़ें सेल्फ असेसमेंट के अमल का हिस्सा हैं जो कि करियर के इख्तियार में एक बुनियादी अहमियत के हामिल हैं। ये जानना कि कौन से मामूलात तुम्हारे लिए एक अच्छी जॉब मुलाजमत की राह में आसानियाँ पैदा करती हैं। तुम्हें उन सरगर्मियों की जांच पड़ताल के लिए भी वक्त निकालना चाहिए जो तुम फारिग वक्त में करना पसंद करते हो। तुम्हारे मशागिल और फुर्सत की सरगर्मियाँ मुस्तकबिल के करियर के तयन में बहुत रहनुमाई करती हैं। It should, however, be kept in the mind that nothing is constant except change. Everybody changes, as do our likes and dislikes. Something we loved doing 2 years ago may now give us displeasure. Always take time to reflect on the things in your life that you feel most strongly about. Make a list of your likes and dislikes, needs and wants. Reflect on your current career path. If your job and career fall under like you, know that you are still on the right path. Take time to understand your interests and the motives that drive your sense of success and happiness. ताहम ये बात ज़हनशीन करनी चाहिए कि तब्दीली के अलावा कोई भी चीज़ मुस्तकिल नहीं है। हमारी पसंद और नापसंद की तरह हर एक तब्दील होता रहता है। कोई चीज़ जो हम 2 साल पहले करना पसंद करते थे शायद वो अब हमें परेशान करते। हमें उन चीज़ों पर ध्यान दें जो तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा महसूस करते हो। अपनी पसंद नापसंद और ज़रूरियात में सोचो, गौर करो। अगर तुम्हारी मुलाजमत करियर पसंद के ज़ुमरे में आते हैं तो तुम जानो कि तुम अभी भी सही रास्ते पर हो। अपनी दिलचस्पी और मकासद की समझने की तरफ ध्यान दो जो तुम्हारी कामयाबी और खुशी के एहसास की राह मुतय्यन करती हैं। After you have identified your interests, search for occupations. For example, if you like children or reading,
Page 104. Explore a career in early education or library sciences. Careers such as daycare worker or pediatric nurse, elementary or Montessori teacher are also options that allow you to work with children. Similarly, if you take initiative in helping others and assist people in their critical state, you can opt for medical profession and so on. अपनी दिलचस्पियों की निशानदेही के बाद पेशों की तलाश शुरू कीजिए. अगर तुम बच्चों को या पढ़ाने को पसंद करते हो तो इब्तदाई तालीम या लाइब्रेरी साइंस के शोबों में जॉब तलाश करें. करियर्स मसलन दिन के वक्त देखभाल करने वाले बच्चों की नर्स, एलिमेंट्री या मॉन्टेसरी टीचर, छोटे बच्चों की पढ़ाई, ये ऐसे शोबे हैं जो तुम्हें बच्चों के साथ काम करने का मौका फराहम करते हैं. इसी तरह अगर तुम दूसरों की मदद और सख्त हालात में लोगों की मदद से आगाज़ करना चाहते हो तो भी शोबे में पेशा अख्तियार कर सकते हो और इसी तरह के दूसरे शोबों में. Now that you have focused on a specific career based on your interest, identify the education, knowledge and skills that it requires. Some careers may be started with a high school diploma, others may require 2-year or 4-year degree. Some fields require rectification for your chosen path. For example, if you choose a career in project management, you may find that certain positions require a certification. If you want to be an engineer, you will have to plan your career accordingly. Moreover, if you are good at mathematics and numeracy, better to opt for management, accounting or finance. अब जबकि तुमने एक ख़ास पेशे पर अपनी तवज्जो मरकूज़ कर दी है जो कि तुम्हारी दिलचस्पी पर मबनी है, तो अब इसके लिए मतलूबा तालीम, इल्म और हुनर की निशानदेही कीजिए. कुछ मुलाजमतें करियर हाई स्कूल डिप्लोमे के साथ, जबकि दूसरों के लिए 2 या 4 साल डिग्री की ज़रूरत होती है. पेज 105. बाज़ शोबों के लिए सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है. मसलन अगर तुम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के करियर का इंतखाब करते हो तो तुम जान लोगो कि इस शोबे में कुछ असामियों के लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है. अगर तुम इंजीनियर बनना चाहते हो तो तुम्हें इसके मुताबिक करियर के लिए मनसूबाबंदी करनी होगी. इसके अलावा अगर तुम रियाजी और आदाद और शमार में अच्छे हो तो तुम्हारे लिए मैनेजमेंट, अकाउंटिंग और फाइनेंस बहुत बेहतर ऑप्शन होगा. It is worth noting that you should consider factors beyond personal preferences. What is the current demand for the field that you have chosen? If the demand is low or entry is difficult, are you comfortable with risk? What qualifications are required to enter the field? Will it require additional education or training? How will selecting this option affect you and others in your life? Gather advice from friends, colleagues and family members and also interact with those who are already in this field. Consider potential outcomes and barriers for each of your final options. ये बात काबिल गौर है कि तुम्हें ज़ाती तरजीहात के अलावा भी अवामिल पर गौर करनी चाहिए. तुम्हारी मुंतखब करदा शोबे का हालिया डिमांड क्या है? अगर तलब कम हो या इसमें दाखिला होना मुश्किल हो तो क्या तुम इस ख़तरे से निमट लोगे? इस शोबे में दाखिल होने के लिए कौन सी तालीमी काबिलियत दरकार है? क्या इसके लिए अज़ाफ़ी तालीम या तरबियत की ज़रूरत होगी? इस शोबे को मुंतखब करना तुम्हें और दूसरों के लिए कैसे मुतासिर करेगा? दोस्तों, साथी और ख़ानदान के अरकान से मशवरा लीजिए और उनसे भी जो पहले ही इस शोबे में काम करते हैं, और अपनी हर आखिरी ऑप्शन के इम्कानी नताइज पर, रुकावटों पर भी गौर कीजिए. If you are pragmatic and practical in your choice of career, then create your career action plan. It's important to be realistic about expectations and timelines. Daydreaming, over expectations and setting unrealistic goals may detract you from your dream job. Page 106. Write down specific action steps to take to achieve your goals and help yourself stay organized. Check them off as you complete them, but feel free to amend your career action plan as needed. Your goals and priorities may change and that's perfectly okay. अगर तुम एक करियर के इंतखाब में हकीकत पसंदी और अमली तर्ज अमल पर यकीन रखते हो तो फिर करियर एक्शन प्लान बनाइए. तवक्कात और टाइमलाइन के बारे में हकीकत पसंद होना अहम है. ख्याली तसव्वुरात, बेजा तवक्कुआत और गैर हकीकत पसंदाना मकासद तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक जॉब हासिल करने के रास्ते से हटा सकते हैं. अपने मकासद हासिल करने और पूरी तरह मुनज़्ज़म रहने के लिए मखसूस अमली इक़दामात लिख लीजिए और मुकम्मल होने पर उन पर निशान लगाकर जांच पड़ताल कीजिए. लेकिन ज़रूरत के मुताबिक अपने करियर एक्शन प्लान में आज़ादाना तौर पर तरमीम भी कीजिए. It is hoped that these suggestions and steps will serve as beacon in choosing your career. If you have any queries or confusion regarding the choice of your career, do not hesitate to ask. I wish you the best of luck for your future career. With kind regards, Dr. Jamshed. उम्मीद की जाती है कि ये तजावीज़ और इक़दामात करियर के इंतखाब में मशले राह का काम देंगे. अगर करियर इंतखाब के मामले में तुम्हारे जहन में सवालात और कन्फ्यूजन हो तो पूछने में हिचकिचाहट महसूस ना कीजिए. तुम्हारे मुस्तकबिल के करियर के लिए मेरी नेक तमन्नाएं तुम्हारे साथ हैं. अदाब व सलाम, डॉक्टर जमशेद. Page 107. Comprehension. Answer the following questions.
Question number 1. What is the dominant theme of the letter? Answer. The dominant theme of the letter is the selection of career or career choice and the steps involved in career selection. These steps include self-assessment, your likes and dislikes, identification of interest, and then the knowledge and skills required for it. Question number 2. Why don't the career expert mention any specific profession as career? As career is a broader term which requires so many skills, education, identification of interest, likes and dislikes, knowledge and qualification, additional education and training. So it is too much personal decision. That is why the expert has not mentioned the specific profession. Rather, he has given valuable suggestions and steps as to helping in choice of career. Question 3. Why is the decision of choice of career considered the toughest? Give examples from the text. Answer. Career selection is an important decision you will make in life. It is not confined only to earning money. Decisions made in hurry may displace you at the end. Therefore, we should be careful for career selection. You have to do self-assessment and look back to past like situations. Make a list of likes and dislikes, identify your interest and then identify education, knowledge and some specific skills required for a specific career. Apart from this, the current demand for the field is also important. All these steps and careful considerations make the selection of career a difficult and the toughest of all decisions that we make in our lives. Page 108, question number 4. What is self-assessment? How far it is helpful in the choice of career? Answer. As career selection is entirely personal decision, as it should be made by a person himself, the first step in choice of career is self-assessment. It means that you have to know about yourself, your skills and the things you enjoy doing and what are the things which you consider important in your work. All this information is part of process of self-assessment. Self-assessment is fundamental to career development and it gives us great insight into future career paths. Question 5. Summarize the text of lesson and extract the main points of the process of career choice. Read the summary of this lesson for this answer. Question 6. Evaluate the step of career choice and tell how effective or otherwise they are for your choice of career. Answer. All the steps discussed in this letter are very valuable and effective. They are effective for my choice of career. In the selection of career, self-assessment, retrospection, identifying likes, dislikes and motives, interests, needs and wants. All these are very helpful. After having knowledge about all the above things, start your search for occupation and then identify the required skills, knowledge and education, degrees, experience and certification for specific occupation. All these steps make it easy for you to have a good choice of yourself. All these steps are very effective for our choice of career. Question 7. Prepare a concrete action plan for your future career and share it with your class for critical evaluation. Formal letter layout. Your address, date, name, job title and address of the person you are writing to. Dear Sir or Madam with title. Topic sentence of the letter. Body of the letter. All the details. Yours sincerely, faithfully. Your signature, your name. Page 110. Activity. Question. Write a letter to a company manager for the post of an accountant. Answer. For the answer of this question, see letter writing section in the last of this book. Unit 8. Wasteland. Page 111. Cans, carafe, poly bags, glinting on the verges of million miles of roadways, lying in scrub, grass, dirt, leaves, sand, mud, but never hidden, shining in the sun or picked by moon or the beam of headlights at night, washed by rain or flattened by wheels, but never dulled, never buried, never destroyed. Here is the mark of savages, the testament of wasters, the stain of prosperity. कैन, शीशे की सराही और प्लास्टिक के थैले जो लाखों मील की सड़कों के किनारे पड़े होते हैं, जो कि कूड़े करकट में पड़े होते हैं, घास, गंद, पत्ते, रेत, कीचड़, लेकिन छुपे नहीं, धूप में चमकते हुए चांद की रोशनी या गाड़ियों की रोशनियों में रात के वक्त चमकते हुए, बारिश से धुल जाते हैं या पहियों के नीचे आ जाते हैं, मगर ना वो मध्यम पड़ जाते हैं, ना दफन हो जाते हैं और ना तबाह हो जाते हैं। ये दरिंदों और गैर महज़ब लोगों की निशानी है। ये ज़ाया करने वालों का मंशूर और खुशहाली पर एक दाग है। Who are these men who defile the grassy borders of our roads and lanes, who pollute our ponds, who spoil the purity of our ocean beaches with the empty vessels of their thirst? Who are the men who make these vessels in millions and then say, drink and discard? What society is this that can afford to cast away 1,000,000 tons of metal and to make of wild and fruitful land a garbage heap?
ये कौन लोग हैं जो हमारे सड़कों और गलियों के सब्ज़ किनारों के हुस्न को नुकसान पहुंचाते हैं, जो हमारे तालाबों को आलूदा कर देते हैं, जो हमारे समंदरों के साहिलों की सफाई को अपने प्यास के खाली प्यालों से ख़राब करते हैं। ये कौन लोग हैं जो इन बर्तनों को लाखों की तादाद में बनाते और फिर कहते हैं पियो और फेंक दो। ये कौन सा माशरा है जो लाखों टन दहात को फेंकना बर्दाश्त कर सकते हैं और सब्ज़ो शादाब और कारआमद ज़मीन को गलाज़त के ढेर में तब्दील करता है। What manner of men and women need thirsty feet of steel and 200 horsepower to take them singly to their small destinations? Who demand that what they eat is wrapped so that forests are cut down to make the paper that is thrown away, and what they smoke and chew is sealed so that the sealers can be tossed in gutters and caught in twigs and grass? किस किस्म के मर्द और औरतों को इन चीज़ों के ठिकाने लगाने के लिए 30 फुट स्टील और 200 हॉर्स पावर की ज़रूरत होती है? कौन ये मुतालबा करता है कि वो जो कुछ खाते हैं उसको लपेटने के लिए जंगलें काट कर कागज़ बनाया जाता है जो वो फेंकते हैं, और जो कुछ वो पीते हैं और चुबाते हैं इनको बंद किया जाता है ताकि बंद करने वालों को नालियों में गिरदाया जा सके और टहनी और घास में झकड़ लिया जाता है? What kind of men can afford to make the streets of their town and cities hideous with neon at night and their roadways hideous with signs by day, wasting beauty? Who leave the carcasses of cars to rot in heaps? Who spill their trash into ravines and make smoking mountains of refuse for the town's rat? What manner of men choke off the life in rivers, streams and lakes with waste of their produce, making poison of water? Page 113. किस किस्म के लोग अपने कस्बों और शहरों की गलियों को रात को नियॉन से बदसूरत बनाने के मुहतमिल हो सकते हैं और दिन के वक्त अपने रास्तों की खूबसूरती ख़त्म करने वाले निशानों से ख़राब कर सकते हैं? कौन कारों के ढांचों को गलाजत के ढेरों में ख़राब होने देते हैं? कौन शहर के चूहों के लिए गलाजत के अंबार लगाने के लिए गंदगियाँ गटरों की तरफ बहाते हैं? किस किस्म के लोग अपने कूड़े करकट के ज़रिए पानी को जहरीला बनाकर दरियाओं, नदी, नालों, तालाबों के अंदर मौजूद ज़िंदगी को मिटा देते हैं? Who is as rich as that? The wasters and the spoilers are impoverishing our land, our nature and our beauty so that there will not be one beach, one hill, one land, one meadow, one forest free from the debris of man and the stigma of improvidence. कौन इतनी इस्तात रखता है गंदगी फैलाने वाले लोग हमारी ज़मीन, फितरत और हमारे हुस्न को खराब कर रहे हैं ताकि कोई भी एक साहिल, एक पहाड़, एक ज़मीन और एक चरागाह और एक जंगल इंसान के फाजिल मादाओं और बेपरवाही के धब्बे से आज़ाद ना रहें? Who is so rich that he can squander improvidence, wealth of earth and water for the trivial needs of vanity or the compulsive demand of greed, or so prosperous in land that he can sacrifice nature for unnatural desires? The earth we abuse and the living things we kill will in the end take their revenge, for in exploiting the present we are diminishing our future. साथ रखता है कि वो बेपरवाही दुनिया की दौलत और पानी अपनी लाजमी लालच और बेहूदगी की मामूली ज़रूरियात के लिए कुर्बान करें? या कौन इतना खुशहाल है कि वो फितरत को गैर फितरी ख्वाहिशात के लिए कुर्बान करे? ये ज़मीन जिसको हम आलूदा करते हैं और जानदार चीज़ें जिनको हम हलाक कर देते हैं, ये आखिरकार अपना बदला लेंगे क्योंकि इनके वजूद से गलत फ़ायदा लेने में हम अपना मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हैं। Page 114. And what will we leave behind us when we are long dead? Temples, amphora, sunken treasure? और मरने के बाद हम अपने पीछे क्या छोड़ेंगे? मंदिर, दो दस्ता सराही या धंसा हुआ खजाना? Our mountains of twisted rusted steel, cannons of plastic container and a million miles of shores garlanded not with the lovely wreck of the sea but with the cans and bottles and light bulbs and boxes of people who conserved their convenience at the expense of their heritage and whose ephemeral prosperity was built on waste? या मरे हुए जंगलूद स्टील के पहाड़, प्लास्टिक कंटेनर के गहरे घड़े और लाखों मीलों पर मुश्तमिल साहिलें जो कि समुद्री काई से मज़य्यन नहीं बल्कि लोगों के कैन, बोतलों, रोशनी के बल्बों और संदूकों से सजाए गए हों, जिन्होंने अपने वर्से की कीमत पर अपने आराम की हिफाजत की और जिनके जल्द ख़त्म होने वाली खुशहाली की बुनियाद ग़िलाज़त पर रखी गई? Comprehension. Answer the following questions. Question number 1. What is Manus's thesis of essay's Wasteland? Answer. The main thesis of this essay is as under. Man is inflicting environment devastation on earth by throwing various kinds of waste and other harmful things into the environment. Question number 2. How many examples of waste does man cite
What do they have in common? Answer. The author has referred to many wastes like cans, carafe, polybags, smoke, industrial waste, human debris, and other waste materials thrown on the land, ocean, rivers, and into the air. All of these wastes have one thing in common, and that is they all harm the environmental and are dangerous for human, animal, and plant health. Question 3. What purpose does Manus want to achieve? Does it work? How do you as a reader respond to each paragraph? Answer. The author wants to achieve her only purpose, and that is to make us understand that human species is destroying nature by throwing waste into the environment. But man is indifferent towards his heinous crime. He is doing all this harm unknowingly. The author has adopted a unique style, and each and every paragraph appeals to our conscience. Question 4. In what way is author essays persuasive? How does it differ from a formal argument? What would make it a formal argument? Author's essay Wasteland is an interesting essay. It makes us reflect at how human is responsible for doing harm to the environment. She does not give direct arguments, rather uses the device of repetition and questioning to emphasize and divert our attention towards the consequences of our action. This essay differs from formal mode of argumentation. If she had used direct method of explaining kinds of pollution and its consequences, it would have made it formal argument. Question number 5. In paragraph 5, authors write, there will not be one beach, one hill, one lane, and one meadow, one forest free from the debris of man and the stigma of his improvidence. Is it exaggerated or accurate? Answer. The above statement of the writer is not accurate. 1. Page 116. Rather, it is exaggerated statement. Actually, she wants to make us reflect and emphasize the point that we ourselves are destroying the nature, and our attitude is very indifferent, which is a matter of great terror for us. The aim of this exaggeration is to refer to our thoughtlessness. Question 6. Who is Manus' audience? What assumptions does she make of it? Manus' audience is all human species. She addresses all the general public to make them understand the results of human activities on earth. But in this essay, she is speaking about the United States, but is also a message to the whole world. Question 7. Why does Manus use such a short paragraph? Why not merge it with the longer paragraph that follows? As the whole essay is based on emotions, the writer has used this short paragraph to highlight the bad effect of human action on earth. She intends to separate the good thing from bad and unwanted thing like rusted steel, shores garlanded with cans and bottles, light bulbs and boxes. In this way, she is successfully in catching our attention. Question 8. Is Manus' arguments based on emotion or factual evidence? Manus' arguments are based on factual evidence, but she does not give plain and simple evidence. Rather, she uses emotional language and emotionally charged words and phrases to emphasize her point of view and catch the attention of readers. Page 117. Vocabulary and grammar. Fill in the blanks with one of the following words. Before going to sleep, I like to read for half an hour. 2. Call me as soon as you get to the hotel, okay? 3. First we went to watch a film at the cinema. Afterwards we went to have a drink together. 4. I didn't look at the answers until finally finishing the test. I didn't cheat. 5. If you see this book on sale for less than $10, buy it immediately. It usually costs nearly $20. 6. After following Mrs. Abrar for almost an hour, I saw her enter the restaurant, so I came back to the office before calling you, Mr. Ali. 7. We looked in 4 stores before finally finding it one very near our house. 8. I don't want it in 10 minutes. I need it now. 8. Find the regular verb in each line and write it into the blank and use them in sentences. 1. Play. We often play cricket in the school playground. 2. Listen to me, please. 3. Help. We should help our parents in daily chores. 4. Like. I like him very much. 5. Clean. Always clean your teeth. 6. Watch. I watched a movie. 7. Cook. He cooked meat. 8. Answer. I can answer your question. 9. I want to become a teacher. 10. Open. Please open the door. Page 118. Change the verb in brackets into the simple past. I heard a new song on the radio. I read 3 books last week. They spoke Urdu to the waitress. He understood during the class, but now he doesn't understand. 5. I forgot to buy some milk. 6. She had a baby in June. 7. You lost your keys last week. 8. They swam 500 meters. 9. At the age of 23, she became a doctor. 10. I knew the answer yesterday.